So the common errors that we are going to discuss in today's class are the very first common error that generally 90% of Indians do. That is, when we talk to somebody like for the first time, this is a very common thing. When you meet anybody for the first time, you give your introduction, right? जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, राइट? एंड इन दैट इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू से? आई वांट टू आस्क यू ऑल, मुझे कहना है इन हिंदी, आई एम सेइंग माय नेम, सॉरी, मेरा नाम नेहा है. ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. आई वांट टू सी हाउ डू यू ट्रांसलेट इट. I have started with this point because in the morning session, I asked you all to give your introduction, and I found a few mistakes. That's why I've started with this point only. Now, once again, I'm asking you all to translate this line. My name is Neha sorry, मेरा नाम नेहा है in English. Let me see your responses. My name is Neha. Neha here. Thank you, Amarjeet Singh, for showing trust in us and sharing and liking. I know the fact तुम बहुत कम YouTube channels like करते हो. And you're sharing us, that means a lot. Thank you so much. Neha this side, my name is Neha. All right. A lot of students have replied by saying my name is Neha or I am Neha. That's right. But a few are also saying myself Neha. See, I really wanted to work on this area. In the morning session as well, a lot of you gave your introduction by telling your name by using this word myself. The very first thing that I want to correct in this session is using myself while giving your introduction is wrong. It's grammatically incorrect. Whenever you want to tell your name, you can tell it by saying, my name is Neha or I am Neha. Avoid using myself. Now, let me tell you the reason. See, myself is a reflexive pronoun. I hope you all know what are pronouns जो noun की जगह use होते हैं, like he, she, my. याद आए बचपन में किए थे? Yeah, exactly right. He, she, my. So when we add self, yeah, like herself, himself, myself, itself, then they become reflexive pronoun. अब detail में reflexive pronoun तब करेंगे when we will go on the grammar workshop. Here, I just wanted to give you a hint what all reflexive pronouns are. So, myself, herself, himself, they all are the examples of reflexive pronouns. Now, the rule of grammar says that whenever you want to start a sentence, avoid using reflexive pronouns. जैसे myself से start नहीं करो, herself से start नहीं करो. मैं साथ साथ ट्रांसलेट कर रही हूँ. Yes, of course, मुझे messages आ रहे हैं. Even I remember कि दोनों लैंग्वेजेस में बोलना है. डोंट वरी. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. जो भी आपको लाइन स्टार्ट करनी हो, जब भी आपको कोई लाइन स्टार्ट करनी हो इंग्लिश में, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कीजिए. एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जिसमें पीछे एस ई एल एफ लग जाता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ. I hope it is clear to you all. So let me get it recapitulated once again. Where if you want to tell your name to somebody, instead of saying, my name is Neha, from now onwards, you will say, I am Neha. Or instead of saying myself Neha, you will say, my name is Neha. Or I am Neha. Yeah, Neha here. Yeah, hey there. I am Neha. This is how you can start your introduction. Next, once I tell my name, the other thing that I would like to do is ask your name as well. If two people are in conversation, one will ask, when one will tell the name, the the next step that is to be followed is asking other person's name. That comes in basic etiquettes, right? So what line would I use to ask the name of the other person? Hello, my name is Neha. What is your name, right? और who are you? That seems a bit rude, right? थोड़ा सा रूड लग रहा है. प्यार से बोलने की कोशिश करेंगे, so what is your name? और थोड़ा और पोलाइट बोलने की कोशिश करेंगे, would you mind telling your name please? This is the right format. But before that, I would like to correct you because a few students, in fact a lot of people, not even a few, they use this phrase, what is your good name? I want to ask you all, क्या कभी किसी के पेरेंट्स बच्चे के बर्थ पे बैड नेम भी रखते हैं? नहीं ना?
क्या आपने कभी किसी का बैड नेम भी सुना है? कि किसी ने बोला आप उससे पूछो, "हे, व्हाट इज़ योर नेम?" और वो बोले, "दिस इज़ माय गुड नेम एंड दिस इज़ माय बैड नेम." No, of course. So why do you add this adjective good when you're asking somebody's name? आप तो उसको डिग्रेड कर रहे हो कि तुम्हारे दो नेम है, गुड और बैड, गुड वाला बता दे चल. Right? So this is something unethical. This is something grammatically incorrect. Right? This is a common error that generally most of people do. So from now onwards, after taking this workshop, you all have to remember and keep this thing in your mind that whenever you want to ask somebody's name, you can simply ask by what is your name, what's your name, or if you want to ask politely, then you may say, would you mind telling your name, please? That's it. Moving to the third part that we are going to discuss. The third point is you must have seen people saying that I like your dressing sense. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है. और sometimes we say, oh, you have got good dressing sense. आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है. Is there any error that you can find in this sentence? Do let me know by writing in the comment box. I want to see your answers. Can you see any error in this sentence? I like your dressing sense. ओके. ऑल राइट. बच्चे कह रहे हैं नहीं, कोई गलती नहीं है. जोशना सिंह, जोशना. ओके, माय स्टूडेंट, गुड. ऑल राइट. A lot of students have replied by saying no, there's no mistake. A few are saying that instead of dressing sense we should use dress sense. That is absolutely right. See, dressing sense is not the right phrase to be used in English. If you want to ask somebody about his or her dressing sense, you may use the phrase dress sense instead of dressing sense. Or if you want to say to somebody that I like your dressing sense, so instead of saying I like your dressing sense, just say I like your dress sense. Or your dress sense is good. He has got good dress sense. This is how we can use this phrase. Dressing sense is absolutely wrong. Instead of dressing sense, you must use dress sense. Dress sense. Fourth point, and a very important point, that is ANYWAY. It's anyway, right? And I've seen a lot of celebrities in their interviews when they are discussing about something and they want to move to the next topic, they say anyways, let's leave it. Anyways, let's not talk about it. Is there any error you can find in this line? Anyways, let's not talk about it. Use your wits and do let me know. See, 80% of Indian population use this word in a wrong way. Anyways is grammatically incorrect. If you really want to use this word, then use it properly. The right way to use it is anyway. Adding an extra sense makes it incorrect grammatically. Right? I hope it is clear. So from now onwards, if you want to say, anyways, let's not talk about it. So instead of saying anyways, you will be using anyway. Let's not talk about it. ये लाइन बोलते बोलते एक वर्ड याद आया. बहुत बार हम ऐसे स्पेशली आंटीज वगैरह पूरी बात होने के बाद हम लोग बोल देते हैं, अरे हमें क्या, छोड़ो. हम पूरी चिट चैट कर लेते हैं अबाउट समबडी. आपको पता है उसके घर में क्या हुआ, लड़ाई हो गई सास बहू की, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बहुत सारी चिट चैट. एंड आफ्टर दैट हम कहते हैं सानू की, हमें क्या, चल छड़ो, छोड़ो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग छोड़ो, छड़ो, हम इंग्लिश में अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं लेट्स लीव इट. राइट? Why are we talking about it? Let's leave it. Let's leave it is a general English slang that most of the people use in English language. Today, I am going to give you one more word to substitute this word, let's leave it. That is chuck it. In informal English, you may use it. That sounds really sophisticated. Let's say if I was talking to somebody regarding something, and after the whole discussion, मेरे को ये कहना है कि चलो छोड़ो.
So instead of saying let's leave it, I will say, anyway, let's chuck it. Anyway, not anyways. Leave it ki jagah, chuck it. Fine. I hope it's clear to you all. I hope it is working for you. Next is very important again. That is cousin brother. Can you find anything wrong in this word cousin brother? Ram is my cousin brother. Can you find anything wrong? All right. काफी लोग इसको गलत यूज करते हैं कि वो मेरा कजन भाई है. सी कजन वर्ड इटसेल्फ हैज अ हिडन वर्ड ब्रदर इन इट. कजन मतलब मेरे चाचा. इन हिंदी वी कॉल इट चचेरा भाई और ममेरा भाई, राइट? अब मैं आपसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछने वाली हूँ. कजन का मतलब ही है भाई. फिर आप ब्रदर लगा दोगे, मतलब फिर से भाई. तो ऐसे बोलोगे राम मेरा चचेरा भाई भाई है. इज इट राइट इन हिंदी? दो बार भाई आना. राम मेरा भाई भाई है. गलत लग रहा है ना? सो इंग्लिश में कैसे सही हो जाएगा? कजन वर्ड, it is already it is already having word brother and sister included in it. So how can we use one more word brother and sister? Right? This subtracts to the beauty of this word, this slang. So instead of using cousin brother or cousin sister, from now onwards, if you want to address somebody, you can only say he's my cousin, right? That means आपका चचेरा भाई या मेरा भाई या बहन है, right? I hope it is clear to you all. Next is expire. These days, it's a sad news. Unfortunately, Sushant Singh Rajput has expired. I hope आपको समझ आया मैं क्या बात करना चाह रही हूँ. That he is no more, right? So expire word लोग use करते हैं to signify somebody's death. I got a lots of WhatsApp messages where people were telling me that, you know what, unfortunately Sushant Singh Rajput has expired. From there I got the idea that I will surely correct this wrong English usage in my first day of workshop, and that's why I'm trying to guide you here. See, expiry date तो कभी भी इंसान की नहीं होती. Have you ever seen anybody, any child who has taken birth with an expiry date written on the body? आप अपना चेक करो ना, कहीं एक्सपायरी डेट लिख के भेजी है भगवान ने? नहीं, राइट? ह्यूमन बीइंग्स की एक्सपायरी डेट कभी भी नहीं होती है. Non-living things, objects, products, they have expiry date, but human beings, they never have expiry date. So how can we use this word expired for human beings? It is grammatically incorrect. Rather, if you want to say that uski death ho gayi hai, you may say that he is dead, he is no more. और थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज करना है तो आप ये vocabulary word learn कर सकते हैं, that is demise. DEMISE, डिमाइस. डिमाइस का मतलब होता है एंड होना किसी चीज का या फेलियर हो जाना किसी चीज का. दैट दिस वर्ड मे बी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. कि आपका फोन खराब हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, डिमाइस वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दैट. किसी चीज का फेलियर या खत्म हो जाना, एंड हो जाना. फोन खराब हो गया उसके लिए भी यूज कर सकते हो. ह्यूमन बींग कोई किसी की डेथ हो गई उसके लिए भी यूज कर सकते हो. For example, recent demise of Sushant Singh Rajput has left everyone dismayed. सबको दुख में डाल दिया. I repeat once again. एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल में कैसे सेट करेंगे डिमाइस को. Recent demise of Sushant Singh Rajput has left everyone dismayed. Right? So from now onwards, if you want to tell anybody that that person is no more, so instead of saying he has expired, you may say he's no more, he's dead, or he has met his demise, right? Or the recent demise of that person has left us dismayed. Next, at times we get a situation where we want to tell that मेरे 10 friends हैं, उसमें से कोई एक को कोरोना वायरस हो गया है. अनफॉर्चुनेटली नाउ, चलो लेट्स चेंज द एग्जाम्पल, कि मेरे 10 फ्रेंड्स हैं उसमें से कोई एक की शादी हो रही है, राइट? तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगी? मेरे बताने से पहले लेट मी सी हाउ डू यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश.
Just tell us by writing in the comment box. English translation of the line that मेरे 10 friends में से एक की शादी हो रही है. Let me see your answers. Very good. One of my friends is getting married. One of my 10 friends get married. Okay, this is wrong, Anshika. Out of 10 friends, okay, okay, that's great. Deepa Grover, right. Rajesh Mittal, right. Bhumika Malik. Okay, let me tell you the concept. See, in Hindi मैं कह रही हूँ मेरे 10 friends हैं, उसमें से किसी एक की शादी हो रही है. So total number of friends 10 है, right? तो वो प्लूरल है, ज्यादा है. आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर स्टैंड्स फॉर सिंगल पर्सन, दैट इज वन. सर से सिंगल, सर से सिंगुलर, वन. एंड प्लूरल मोर देन वन. सो यहाँ पे 10 फ्रेंड्स हैं. ऑफ कोर्स इट फॉल्स इन द प्लूरल कैटेगरी. 10 फ्रेंड्स प्लूरल कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा. 10 फ्रेंड्स में से एक की शादी हो रही है. एक के लिए तो हमने इस वन को डिस्कस कर लिया कि वन आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स, राइट. सो जो ये 10 फ्रेंड्स है, 10 सिंगुलर तो नहीं हुआ. एक होता तो सिंगुलर होता. एक ये था, इसके लिए हमने सिंगुलर यूज किया वन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 10 फ्रेंड्स, सो दैट फॉल्स इन द प्लूरल कैटेगरी. दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेंड, अंशिका ध्यान से देखिए, you did the mistake here. You wrote one of my friend. That's wrong. One of my friends. This is a general mistake being done by a lot of students. They say one of my friend is coming here. उनको लगता है कि एक की बात हो रही है तो फ्रेंड को भी वो सिंगुलर कर देते हैं. So here you will have to be very cautious. If you are talking about one from a lot of people, then if you're talking about that one person should be in singular. एंड जो एक बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, 10-20 में से एक की बात हो रही है, तो उन 10-20 लोगों के लिए वील यूज द प्लूरल फॉर्म. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग फॉरवर्ड, हिंदी में एक लाइन बोलूंगी, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? When we want to start a conversation with somebody, this is a very common slang. That is, भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? या कुछ नहीं समझ आता तो पूछने लगते हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है, या बड़ी धूप है, या आज तो बहुत गर्मी है. Right? So these are some common slangs to start a conversation with anybody. To ask for time or to talk about weather. So generally people start the conversation by asking for time. कि आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? If you want to start the conversation with somebody by asking the time, how are you going to translate this line, आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, in English? Do let me know by writing in the comment box quickly. Very good, very good. A lot of students are still saying that, what's the time in your watch? Very good, very good, very good. Satyapal Singh is saying, what's the time on your watch? Himanshi Tawar, absolutely right. हिमांशी तंवर, नेहा मैम की स्टूडेंट होने का थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिला बेटा आपको. गुड. ऑल राइट. What is the correct meaning of summoned, Kavya? That I'll let you know later on. First, focus here. So, 90% of students have replied by saying, what's the time in your watch? ठीक भी है. हिंदी में मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है. एंड फॉर दिस वर्ड में, इंग्लिश में हमने preposition in ही सीखा है अभी तक. किसी चीज में के लिए we use this English preposition in. But when we talk about आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, this phrase becomes wrong if we use in here. Rather, we should use by instead of preposition in. So the right way to ask somebody time is, what's the time by your watch? All right, excuse me, what's the time by your watch? All right. Next, simple पूछना है और polite way में तो आप कह सकते हैं, would you mind please telling me the time? All right. This is how we can ask for time from somebody. Moving forward. This is a very common mistake
that is being done by almost everybody. किसी की एनिवर्सरी बर्थडेज आते हैं, राइट? सबके ही आते हैं. And we try to wish them. This is a sweet gesture that we try to show, to present, to portray our love or respect for somebody. But अगर हम उस लव और रिस्पेक्ट को गलत इंग्लिश में पोर्ट्रे करें तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है, राइट? किसी को बोलना तो चाह रहे हैं खुशी से हैप्पी एनिवर्सरी, लेकिन अगर आप गलत वर्ड यूज करेंगे तो खुशी के साथ साथ बेइज्जती भी हो जाएगी. सो बोलिए, ट्राई टू विश एवरीबडी, ट्राई टू पोर्ट्रे योर लव, ट्राई टू शो सम रिस्पेक्ट, बट इन करेक्ट इंग्लिश. सो for all those who say happy marriage anniversary, who wish happy marriage anniversary to their acquaintances, to their friends, relatives, please stop doing that. It's absolutely incorrect grammatically. See, anniversary, marriage anniversary nahi use kar sakte. Marriage is a relationship that we share for years and years. खुश होके या दुखी होके करना पड़ता है जो, वो मैरिज है. जो एक बंधन में आप बन जाते हो, इन हिंदी लेट मी ट्रांसलेटेड, वो जो हम एक बंधन निभा रहे हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स, दैट इज मैरिज. बट जिस दिन आपकी शादी होती है, द डे यू गेट मैरिड, द डे यू गेट योर सेल्फ टाइड इन दैट मैरिज रिलेशनशिप, दैट डे इज कॉल्ड वेडिंग डे. दैट डे इज कॉल्ड वेडिंग डे, राइट? अब लेट्स से आप एक डेट को मैरिज आपकी हुई, दैट इज 22 फरवरी. तो आप हर रोज तो किसी को शादी विश नहीं करोगे ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. मैरिज तो रोज का बंधन है, हम तो सिर्फ उसी दिन विश करते हैं because we get nostalgic, because we want because you want somebody to get, the glimpse of the remembrance of that particular day. So in that particular case आप उस दिन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, उस दिन को याद दिलाने की कोशिश करते हो, राइट? और उस दिन को मैरिज तो नहीं कहते, उस दिन को तो वेडिंग डे कहते हैं. सो व्हाई डू यू विश समबडी बाय सेइंग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी? मैरिज वर्ड इज रॉन्ग हियर. The right word that should be substituted is happy wedding anniversary, because wedding is the day we are actually congratulating the other person about कि इस दिन आपकी शादी हुई थी, इस दिन पर्टिकुलर हम आपको विश कर रहे हैं. 22 फरवरी को आप किसी को विश कर रहे हो, हर दिन तो नहीं विश कर रहे हो. तो वो जो पर्टिकुलर डे है, जिस डे को शादी हुई थी, वो एग्जैक्ट डेट, दैट इज कॉल्ड वेडिंग डेट और वेडिंग डे. मैरिज तो हर दिन का बंधन है, एवरी डे. हर दिन तो नहीं विश कर सकते, एक ही दिन विश करेंगे. दैट्स व्हाई वेडिंग एनिवर्सरी इज द राइट वर्ड टू बी यूज्ड हियर, राइट? बिकॉज वी गेट नॉस्टैल्जिक फॉर द डे व्हेन वी गॉट मैरिड. नॉस्टैल्जिक वोकैबुलरी वर्ड अगर किसी को नहीं पता लिख सकते हैं. नॉस्टैल्जिक मीन्स व्हेन यू रिमेंबर सम पास्ट डेज, कोई पुरानी यादों को ताजा करना. NOSTALGIC, नॉस्टैल्जिक. सो हर एक साल बाद उस दिन को आप याद करते हो. यू गेट नॉस्टैल्जिक फॉर योर वेडिंग डे. ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट, बहुत लोग यूज करते हैं. इनफैक्ट आई फाइंड अ लॉट ऑफ इंग्लिश ट्रेनर्स यूजिंग दिस वर्ड. दे से अच्छा कोई थोड़ी बहुत बात करी एंड फिर वो बोलते हैं अच्छा प्लीज हाँ रिप्लाई बैक. डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई बैक. या कुछ थोड़ी सी और एलेटेड इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं हो नेहा प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवर्ट बैक. मैं कहती हूँ ओहो वोकैबुलरी वर्ड यूज कर रहे हैं, गुड इंग्लिश. बट अफसोस, अनफॉर्चुनेटली ग्रामेटिकली रॉन्ग. रिवर्ट वर्ड यूज किया मैंने, REVERT. दैट ऑल्सो मीन्स रिप्लाई, रिवर्ट. सी, रिप्लाई का मतलब ही होता है वापस किसी चीज को आप वापस से रिप्लाई आंसर देना, राइट? सो रिप्लाई वर्ड हैज बैक वर्ड इन इट ऑलरेडी. वापस आंसर देना, आंसर बैक रिप्लाई का मतलब है. तो क्या दो दो बार हिंदी में ऐसे बोलोगे वापस आंसर देना वापस? रॉन्ग, राइट? तो इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं आंसर बैक बैक? इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. एंड आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट द फैक्ट अगर यहाँ पे अभी जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से 90% यूज करते होंगे प्लीज रिप्लाई बैक. गलत. आज के बाद
We are not going to use this word, this phrase reply back. Rather, we will just say, please reply. Reply का मतलब ही answer back, right? Or if you want to adorn your language, if you want to beautify it, you may say revert, R E V E R T. I've written here R E V E R T. That also means reply, right? This is an extended version of this word reply. Revert. Revert के बाद भी back नहीं आएगा. Revert also means answer back. Clear? Moving forward. हिंदी में एक लाइन बोलूंगी. फिर से देखती हूँ gives the answer first. आई लाइक योर इंग्लिश हिंदी में सॉरी. मुझे आपके बाल बहुत पसंद है. ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. मुझे आपके बाल बहुत पसंद है. बाल. वेरी गुड मयंक मंगला. आई लाइक योर हेयर इज ओके. ओके ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. वैसे मैंने बड़ी चालाकी से अपनी तारीफ करवा ली है. थैंक यू. हाँ ओके. चलो जोक्स अपार्ट मूविंग फॉरवर्ड. थोड़ा बहुत फन एलिमेंट बीच में रहना चाहिए. सो हियर दिस वर्ड हेयर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वर्ड है. बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं. आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. काफी बच्चों को यहाँ सही आंसर भी दिया है. सो आई एम ग्लैड टू सी दैट. बट फॉर ऑल दोस हु आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स प्लीज बी कॉशियस एंड केयरफुल हियर. एक बाल is also hair, HAIR. 100 बाल is also hair. 10,000 बाल is also hair. Hair is being used in plural sense. एक केस होता है जब हम hairs यूज कर सकते हैं. That I'll tell you later on. अभी के लिए देखिए, if you want to say मुझे आपके बाल पसंद है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका हेयर कलर अच्छा है, in all those situations इधर प्लूरल s नहीं लगता है. All right. In plural and in singular form, hair word is being used as hair. If we are talking about one hair or 100 hair or 2000 hair, it is only hair. It is never hairs. All right. The concept is clear to you all. I like your hair. You have got good hair. या किसी किसी सैलून के बाहर लिखा होता है वी प्ले विद ऑल काइंड ऑफ हेयर्स. अब आप बताइए इसमें गलती क्या है क्विकली. We play with all kind of hairs. What's the error you can find in this sentence? Hair, not hairs. Very good, Diksha Kukreja. Very good. So I'm satisfied that the concept is clear to you all. So we have learned the concept that hair is being used for hair is being used in plural and singular sense in the similar way, that is hair. बट एक केस है, बहुत डीप ग्रामर में चले जाओगे तो आप सीखोगे इस केस को कि एक सिचुएशन में हम हेयर्स भी यूज कर सकते हैं. जो अभी बिगिनर्स हैं वो इसको इग्नोर करें. जिनको ये आंसर आता था, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया, तो इसीलिए मैं इसका एक एक्सटेंडेड डीप ग्रामर केस भी बता दे रही हूँ. कभी कभी हमारे सिर पे गिने चुने 2-3 बाल होते हैं जो बाल्ड होना शुरू हो जाते हैं. ऑल दोज पीपल हु गेट्स बाल्ड हेडेड, उड़ते उड़ते 3 या 4 बाल दिख रहे होते हैं. ग्रैंडफादर्स के, किसी किसी के फादर्स के भी हो जाता है ऐसा. तो जो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन यू हैव गॉट 2 or 3 हेयर ऑन योर हेड एंड यू कैन काउंट देम, in that case you can use word hairs. Only in that case. जो बिगिनर्स हैं, आई अगेन रिपीट, यू इग्नोर दिस एक्सटेंडेड केस. आपको सिर्फ अभी इतना सीखना है, बालों को हेयर बोलते हैं. जिनको ये कॉन्सेप्ट आता था, जो सीखना, जो आगे समझना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज ना हो और सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझे. जब आप बालों को काउंट कर सकते हो, व्हेन इट बिकम्स काउंटेबल, 2 या 3 बाल हैं सिर पे एंड यू कैन काउंट देम. टोटल मैं काउंट कर पा रही हूँ, सिर पे 7 बाल है. देन आई कैन से आई हैव जस्ट 7 hairs on my head. I am left with just 5 hairs on my head. This is how we can put them in example. I hope the concept is clear to you all.
एक बार हिंदी में दोबारा से समझा देती हूँ। बालों के लिए हेयर वर्ड यूज होता है इन सिंगुलर सेंस, इन प्लूरल सेंस। किसी को भी आपको बोलना है आपके बाल अच्छे हैं, इस सैलून में हर तरह के बालों के हेयर स्टाइल्स बनाए जाते हैं। इन सब सिचुएशंस में हम इंग्लिश में एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं? आई लाइक योर हेयर, वी प्ले विद ऑल काइंड ऑफ हेयर। हेयर्स नहीं, हेयर सिर्फ एक केस में यूज कर सकते हैं। कब? जब किसी के सिर पे गिने चुने बाल रहेंगे जो आप गिन सकते हो, काउंटेबल बन जाए। जब हेयर काउंटेबल नाउन की सिचुएशन में वी कैन यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर, अदरवाइज वी कैंट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत बच्चे बोलते हैं जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे इसको? When I was a small kid, I used to be very mischievous. एक बात बताओ, स्मॉल और बिग तो आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हो। दिस इज अ स्मॉल पेंसिल, दिस इज अ बिग पेंसिल, दिस इज अ स्मॉल रूम, बिग रूम, स्मॉल हाउस, बिग हाउस। ह्यूमन बींग्स के लिए भी वही यूज करोगे, देन व्हाट एंड वेयर इज द डिफरेंस? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट. I am trying to teach you that small and big are the adjectives that are being used for non-living things. लिविंग लोगों के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी वही यूज करने लग जाओगे तो फर्क क्या रह जाएगा? Therefore, the adjectives to be used for human beings are young, old, teenager. बनाए हैं इतने सारे इंग्लिश बनाने वाले ने एडजेक्टिव्स। सो हम क्यों यूज करते हैं व्हेन आई वाज स्मॉल? बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बड़ों को मैंने देखा है, व्हेन दे गेट नॉस्टैल्जिक, आई होप यू नो द मीनिंग, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। अभी बताया था, when they get nostalgic, they say, when I was small, I used to play marbles. Small गलत है. When I was young. Young, old, teenager, ये सारे words use करो human beings के लिए. Small is being used for non-living things. I hope the concept is clear. Moving forward to the next concept. The next concept says कि बहुत सारे बच्चे ना जब स्कूल में, generally in my job I encounter this kind of situation. Whenever the duration of examination starts, students come up with a very common excuse, and that is, ma'am, हम ना 5 दिन के लिए आ नहीं पाएंगे, हम आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं. इज इट द राइट वे टू यूज आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं? मैं उनको एक स्माइल देके बोलती हूँ, आउट ऑफ टाउन तो चले जाना, लेकिन एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे, और जब तक इस लाइन को ठीक करोगे नहीं ग्रामेटिकली, तब तक छुट्टी नहीं दूंगी. आप मुझे बताइए, व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस लाइन, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन? इज देयर एनी? लेट मी सी योर आंसर्स. सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं. सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैम हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं. अब तो आपको पता ही लग गई गलती. क्लेवर यू. ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर. बच्चे, बड़े, बहुत लोग ये बात बोलते हैं दैट हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं. अरे स्टेशन क्या होता है? बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन थोड़ी ना है. आप एक टाउन में रहते हो, एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई डू पीपल से आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन? it is senseless. If you are going out of a district, sorry, out of station, मेरे मुंह से गलत निकल नहीं रहा है, try to understand my feelings. I don't understand why do people say out of station. आप एक टाउन से बाहर जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा रहे हो, यूज दैट वर्ड, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. स्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है. मेरे को समझ ही नहीं आता ये कौन था पहला इंसान जिसने ये आउट ऑफ स्टेशन वर्ड यूज किया था. और इन ह्यूमन बींग्स सबसे अच्छे होते हैं टू इन मिमिक्री, इन कॉपिंग पीपल, और वो अभी तक कॉपी करते ही आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन. बट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. I hope the concepts are clear to you all and the class was beneficial as well. We have a lot of more concepts left, but then we are running out of time. So don't worry, let's do it tomorrow. इतना सबको समझ आया? Please give a bit of feedback so that I get motivated. Was the class beneficial for you all? Did you learn anything new?